बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक है सीलिया एंड फ्लैजेला। सीलिया एंड फ्लैजेला बोथ हैव देयर ओरिजिन फ्रॉम बेसल बॉडीज। ये आपने पढ़ लिया कि बेसल बॉडीज, सेंट्रियोल्स, सीलिया एंड फ्लैजेला, ऑल ऑफ दीज आर मेड अप ऑफ microtubules, and microtubules are basically made up of tubulin protein. So composition of the cilia and flagella is tubulin, and they have their origin from basal body. अब बेसल बॉडी क्या है? बेसल बॉडी इज सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर, जो आपने इससे पहले पढ़ लिया। दिस सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर गिव राइज दीज फ्लैजेला और सीलिया। दीज आर आल्सो कॉल्ड एज काइनेटोसोम, इनको काइनेटोसोम भी आप कहते हैं। So both have their origin from basal bodies, and basal bodies का structure जो है वो just like centriole, they have peripheral 9 triplets of microtubules, total 27 and hollow. Same is the case with basal bodies, but function of the basal bodies is to give rise cilia and flagella. अब आपके पास जो cilia और flagella है, इनमें basic differences क्या हैं? Chemical composition and जो ultra structure, it is similar. In both cases they have similar structure, but as far as numbers are concerned, cilia are numerous. जैसे आप देखते हैं पैरामीशियम के अंदर, in case of paramecium they have large number of cilia on their surface, while in case of flagella they are few in number. ठीक है। तो when it comes to cilia, they are numerous, large in number, and flagella are few in number. दूसरा जो इनमें डिफरेंस है वो साइज का है। In case of cilia, they are smaller sized, while flagellum are large sized. ठीक है जी। तो इनकी लेंथ ज़्यादा होती है as far as flagella is concerned. जैसे आप यूग्लिना में देखते हैं, they have large flagellum, but in case of cilia they are shorter, they are smaller and they are shorter as compared to flagellum. As far as movement is concerned, जो cilia है, cilia की movement जो होती है वो या तो ये होगी metachronous or it can be synchronous. There are two types of movements in case of cilia. Ciliary movements can be metachronous or synchronous. Synchronous kind of movement in which all cilia move simultaneously. ये सारे के सारे cilia जो होते हैं वो simultaneously अगर move करेंगे तो this kind of movement is synchronous. But in case of metachronous movement, in this particular case, metachronous movement में each next cilia is somewhat different as far as movement is concerned. यानी सारे इकट्ठे move करेंगे तो synchronous, लेकिन अगर एक cilia दूसरे cilia से मूवमेंट के लिहाज से थोड़ा सा पीछे होगा अगर, तो हर नेक्स्ट सीलिया जो होगा उसकी मूवमेंट थोड़ी सी नेक्स्ट लेवल पे होगी एज कम्पेयर टू प्रीवियस वन. सो दे विल गिव जस्ट अ मूवमेंट इन विच ईच नेक्स्ट सीलिया इज स्लाइटली बिहाइंड द फर्स्ट वन. सो इस तरह की जो मूवमेंट होती है इसको आप क्या कहते हैं? मेटाक्रोनस मूवमेंट कहते हैं. जबकि व्हेन इट कम्स टू फ्लैजेला, इन केस ऑफ फ्लैजेला द मूवमेंट इज अनड्यूलेशन. Their movement is called as undulation type of movement. For example, ये जो undulation movement में the curvature or bending starts from the proximal end and it travels towards the free end. जैसे चाबुक की मूवमेंट होती है, this kind of movement is called as undulation movement. इसकी एक और typical movement जो है वो आप देखते हैं, sperm जो होता है, in case of sperm जो होता है, sperm also move in a forward direction, लेकिन their movement is undulation type of movement. It moves through the reproductive tract of the female and it reaches up till fallopian tube and it causes fertilization of the egg, but their movement is somewhat undulation type of movement. So these are the basic differences between cilia and flagella. Now what is structure of cilia and flagella? Cilia and flagella are basically membrane bounded structure, and their main shaft is called as axoneme. It is actually extension of the cell membrane. ठीक है जी. फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास ये एक सेल मेम्ब्रेन है तो इस सेल मेम्ब्रेन में से इसकी बेस के ऊपर क्या होगा? बेस के ऊपर होगा इसका बेसल बॉडी, एंड बेसल बॉडी से आगे जो स्ट्रक्चर होगा इसको आप क्या कहेंगे? दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज एक्सोनीम. ठीक है जी. तो सीलिया का जो मेन जो फाइबर है इट इज कॉल्ड एज एक्सोनीम.
This axoneme is covered as far as cell membrane and cytoplasm. ठीक है जी, it is covered with cell membrane and cytoplasm. These cell membrane and cytoplasm are spirally organized around this axoneme. So on the outer surface of the axoneme, they are having plasma membrane and cytoplasm, which is spirally organized around this structure. So it is a membrane bounded structure. ठीक है जी. The base is called as basal body, and जब आप इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया देखते हैं, ठीक है ना जी, अब आप इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया देखेंगे तो क्रॉस सेक्शनल एरिया के अंदर आपको इसके अंदर जो स्ट्रक्चर नजर आएगा, वो स्ट्रक्चर जो होता है वो 9+2 अरेंजमेंट होती है इसकी, एंड 2 सेंट्रल. यानी आप इसको जब एनलार्ज करेंगे, दिस क्रॉस सेक्शनल एरिया को आप एनलार्ज करेंगे तो आप देखेंगे कि जी ये बाहर इसकी क्या है, दिस वन इज मेम्ब्रेन एंड इट इज हैविंग 9 duplets of microtubules which are peripheral these are 9 peripheral duplets. ठीक है जी, 9 tools. There are 2 central microtubules. ठीक है जी, these are 2 central single microtubules. So this arrangement is called as 9+2 arrangement. ठीक है जी, 9+2 arrangement में total 11 microtubules हैं और इन 11 में से these 9 are duplets and these 2 are singlets. Total 11, but these 9 are actually duplets. So peripheral one are duplets while central one are singlets. They are also having special protein which is called as dynein arm, which connects them together. Dynein arm is basically acting like ATPase and it is responsible for hydrolysis of ATP. They may also have these radial spokes and heads of the radial spokes, and these microtubules are also interconnected through the special protein which are called as nexum. ये nexum के जरिए से आपस में जुड़े हुए भी होते हैं. So this connection is called as nexum. These are doublets and these 2 are singlets microtubules, and they may also have these radial spokes, and this whole structure is giving 9+2 arrangement. ठीक है, so this cross sectional area show this 9+2 arrangement. When it comes to basal body, तो basal body का अगर आप cross sectional area देखेंगे तो आपने इससे पहले पढ़ लिया कि इसमें क्या होता है. इसके अंदर 9 ट्रिपलेट्स होते हैं. ठीक है जी, वो स्ट्रक्चर आप देख चुके हैं कि इसके अंदर ये 9 triplets are there. ठीक है, they are provided with these 9 triplets and center one is hollow. So this one is the structure of basal body and this one is the structure of axoneme. Axoneme या flagellum जो होगा उसका cross sectional area जो होगा, it shows this 9+2 arrangement and this one shows 9+0 arrangement. They have 9 threes, 9 triplets, and these are having 9 doublets plus these 2. So this is the structure of the cilia or flagella. Now next जो है वो मूवमेंट्स जो है वो cilia के अंदर मूवमेंट कैसे होगी और flagella के अंदर मूवमेंट कैसे होगी. So आपने देख लिया इन केस ऑफ जो cilia हैं, ये cilia के अंदर ये जो अरेंजमेंट है 9+2 की, इस 9+2 अरेंजमेंट में से जो 2 ग्रुप्स की शक्ल में ये मूव करेंगे. When it comes to movement, they are responsible for bending and straightening of this cilia, and this bending and straightening obviously is due to
a movement in which one of the stroke is called as effective stroke and other one is called as recovery stroke. So the cilia exerts two strokes. One of them is effective stroke and then recovery stroke. Effective stroke, it causes bending, effective stroke and then recovery stroke. So in case of their effective stroke, 5/9 microtubules are involved. In case of recovery stroke, 4/9 microtubules are involved. So इसको ऐसे समझना कि अगर आपके पास ये 5 जो है ये पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स और ये 4 पेरिफेरल, टोटल मिला के कितने होंगे 9. सो जब 5 स्लाइड पास करेंगे 9 के ऊपर से तो cilia will bend and then 4 it becomes straightened. So it is effective stroke, then it is recovery stroke. Bending stroke, recovery stroke. So they work in two groups. First group is 5/9, which is responsible for effective stroke, and then 4/9 will slide pass and they will be responsible for recovery stroke. So definitely effective stroke is more powerful. It will propel their body in a forward direction, and recovery stroke will reposition them into a previous position. And the energy is provided through the dynein arms, which is acting like a ATPase. It will cause hydrolysis of this ATP molecule, and it will provide energy for effective stroke and as well as recovery stroke. In case of flagellum, their movement is slightly different. जो आपने पहले डिस्कस कर ली कि उसमें undulation type of movement होती है in case of flagellum, and sperm is the best example of undulation type of movement. कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं, कुछ किसी टॉपिक के बारे में आप पूछना चाहते हैं, या कोई किसी लेक्चर को आप दोबारा देखना चाहते हैं या एडवांस उसके बारे में जानना चाहते हैं, तो आप इसके बारे में मुझे मैसेज कर सकते हैं और इंशाल्लाह उस लेक्चर के ऊपर हम काम करेंगे. थैंक यू वेरी मच.